वेलकम यूरो फैमिली। क्या हाल चाल है आप सबका। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो सीन मंजर आज कुछ ऐसा है, एक जनाज़ा लेके आ गए और ये जनाज़ा शराज भाई का जनाज़ा है। और जैसे वो लेके आया तो मैंने उसको कहा एक मिनट। मैं गया और गेंदरी बेलचा उठा के उसके हाथ में दे दिया। मैंने कहा ऐसे कर, ये गेंदरी बेलचा ले ले और जाके इसे कब्रिस्तान में दफना ले। तो वो मुझे कहने लगा कि अगर मैंने इसे दफनाना होता तो आपके पास नहीं लेके आता। तो मैंने कहा सही है, फिर इसे फुल बनाते हैं। और मतलब इसके इंजन में कोई चीज़ मुझे सही नहीं लग रहा है। पूरा का पूरा इंजन फारिग हो चुका है, आयल हर जगह से गिर रहा है और वेड में भी आवाज़ थी। पिस्टन भी इसका सीज हो चुका है और वाल भी दोनों लीक है और क्लच प्लेटों से भी फारिग है। मैग्नेट कवर सब कुछ टूटा फूटा हुआ है। पुशन गिरारी में भी आवाज़ें आ रही है। और इसे फुल बनाएंगे आज की इस वीडियो में। और सबसे पहले इसे डिसेबल करते हैं, उसके बाद क्या सीन करते हैं कि इसे 2 मौके पेट्रोल से इसे साफ़ करके उसके बाद फिर इसका फिटिंग करेंगे। और जो जो सामान इस पे आता है, कितना ख़र्चा आता है, वो सब आप लोगों को इंशाल्लाह वीडियो में शेयर ज़रूर करेंगे। तो चलिए फटाफट से इस कचरे को अपग्रेड करते हैं। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं वीडियो के एंड में। वीडियो फुल एंड तक ज़रूर वॉच कीजिए।
what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world but keep the sky on your mind.
तो ये थी आज की वीडियो, और इसके दूसरे पार्ट में फुल इंजन असम्बल करेंगे। और ये सब कुछ साफ़ कर दिया है, लेकिन एक बार फिर से इसे साफ़ करेंगे। ये तो आरजी जो डस्ट है, जो मिट्टी थी, वो रिमूव हो गई, और एक बार फिर से इसे साफ़ करना पड़ेगा पेट्रोल की मदद से। और फिर मिलते हैं पार्ट 2 में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। तेरी दुनिया